Hello, class 5th students. How are you all? Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study lesson number 2, weather and climate. So here in this chapter, we are going to learn more about what is weather, what is climate, and what is the difference between them. Here we have wow fact. The weather can change many times in a day. बच्चों वेदर क्या है? ये एक फिक्स नहीं रहती है. वेदर जो इट कीप ऑन चेंजिंग. जैसे आज सपोज आज का दिन है. सो आज का दिन कैसा हो सकता है? एक टाइम पे बहुत धूप भी हो सकती है, हो सकता हो बारिश हो जाए, या हो सकता हो तेज हवा चलने लगे. Here you can see which weather conditions have been shown in these pictures. Here some of the pictures are given to you and you have to mention इनमें कौन सी weather condition है. So number 1 is your snowy day, snow day. Number 2 is your rainy day और number 3 is your sunny day. अर्थ जो है बच्चों surrounded है by layer of air called atmosphere weather and is defined as the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time. बच्चों जो हमारी पृथ्वी है ना वो सराउंडेड है बाय द लेयर ऑफ एयर एंड इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और वेदर क्या है? वेदर एक डिफाइंड कंडीशन है एयर टेम्परेचर की, एयर प्रेशर की, विंड की, ह्यूमिडिटी की एंड रेनफॉल की इन द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम. Weather can change from day to day and even from hour to hour. On a sunny day, you can experience a sudden rush of clouds and rainfall may start. हम एक्सपीरियंस करते हैं बच्चों डिफरेंट वेदर कंडीशन इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. नेक्स्ट वी हैव चेंजेस इन द वेदर कंडीशन गिव राइज टू सीजन्स. ठीक है, जैसे जैसे वेदर कंडीशंस में चेंजेस होती है बच्चों, राइज होता है आपका सीजन का. इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी और हमारा जो भारत देश है उसमें कितने प्रकार के सीजन्स हैं? सो उसमें बेसिकली कितने प्रकार के सीजन है? 4 प्रकार के सीजन है. कौन कौन से? विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी प्लेस की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. अलग अलग पार्ट जो है वर्ल्ड के उनके डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं. कुछ रीजन जो है बच्चों बहुत ज्यादा हॉट को एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ रीजन बहुत ज्यादा वेट को एक्सपीरियंस करते हैं ना. एंड अदर रीजन, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां हॉट एंड ड्राइनेस रहती है और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो पूरे टाइम स्नो से ही कवर्ड रहते हैं. सो सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव वेरी हॉट समर एंड सम वेरी कोल्ड विंटर. Then we have wow fact. The science of weather forecasting is called मेट्रोलॉजी. ठीक है, वेदर की फोरकास्टिंग जब होती है बच्चों, भविष्यवाणी होती है कि आज की वेदर कैसी रहेगी या आने वाले 1-2 दिन की वेदर कैसी है, उसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं. हमारे पास क्या है? ये एक प्यारा सा मैप है जिसमें क्लाइमेटिक रीजन ऑफ वर्ल्ड दिया गया है. जहां बच्चों एकदम पिंक कलर है मतलब वहां बहुत ही ज्यादा हॉट एंड वेट रीजन है. Then here we have the color, here we have the science, and they are defining other different types of climate. Here we have light green color, यहाँ warm and wet climatic condition है. जहाँ बच्चों ब्लू कलर है सो वहाँ बहुत मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है. जहाँ एक आप देख सकते हो येलो कलर है, वहाँ बहुत हॉट है और ड्राइनेस है ना. So if the climatic condition in a guiding criterion, then we can divide the world into 7 major climatic region. जो हमारा संसार है, जो हमारा वर्ल्ड है, हम उसको 7 climatic condition में बच्चों डिवाइड कर सकते हैं. Factor determining climate. The climate varies from place to place on the earth. A number of factors determine the climate of a place. It is largely dependent upon the temperature of air and the amount of rainfall. Some of these factors are as follow. Here we have number 1, moisture in the air, height above the mean sea level MSL, distance from the sea, distance from the equator and prevailing winds. Here now let us discuss about, here it is given sun rays falling on the earth. अब आप देखिए बच्चों ये हमारी अर्थ है जो अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है. सो डायरेक्शन इक्वेटर में डायरेक्ट सन रेज फॉल करती है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल पे हल्का सा स्लैंटिंग रेज आती है सन की. इक्वेटर आपको पता है, इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कल है दैट रन्स अराउंड द मिडल ऑफ अर्थ एंड इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पोल्स. दोनों पोल से उसकी डिस्टेंस इक्वल है.
ये जो है इट इज क्लोजर टू सन, सन से क्लोजेस्ट है, एंड एज द पार्ट ऑफ द अर्थ bulges out the most, the sun rays fall directly over the equator and this make the equatorial region very hot. बच्चों सन रेज डायरेक्ट पड़ रही है इक्वाटर पे, इसी वजह से जो इक्वाटर रीजन होते हैं, जो इक्वाटर पे रीजन होते हैं वो बहुत ही गर्म रहते हैं. As we move away from the equator, the sun rays are scattered over a large area, so the rest of the world is not hot as the equatorial region. As the distance from the equator increases, the temperature decreases, and this makes the climate cooler. Then we have height above the sea level. So hill stations कैसे होते हैं? Cool होते हैं, even in the peak summer season. Very high mountains experience snowfall. जो high mountains होते हैं वहां बच्चों snowfall होती है. Most of the peaks in the Himalayan mountains are covered with snow and ice during summers. ये दिखाते हैं that the higher altitude जितनी ऊंचाई होगी बच्चों टेम्परेचर उतना ही ज्यादा लोअर होगा, and in the same latitude actually the temperature decreases at the height of the land increases. Then we have distance from sea. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. सो प्लेस बच्चों जो सी कोस्ट के नियर रहते हैं उनके क्लाइमेट मॉडरेट होते हैं. क्यों? क्योंकि द कूल ब्रीज हवा रहती है जो सी से आती है, एंड ऑल दोज प्लेसेस जो सी से दूर है दे डू नॉट गेट सी ब्रीज, इसीलिए वो एक्सट्रीमली हॉट रहते हैं इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, और इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट. चलिए अब हम कंपेयर करते हैं क्लाइमेट कंडीशंस को इन दिल्ली एंड मुंबई ड्यूरिंग समर सीजन. दिल्ली जो है इक्वाटर से दूर है, स्टिल हैज अ वेरी हॉट क्लाइमेट. मुंबई जो है अरेबियन सी से क्लोजर है देन दिल्ली and it is located along the west coast Mumbai. That is why climate of Mumbai is mild. Climate of Mumbai जो होता है mild होता है बच्चों, एवरेज होता है in comparison to that of Delhi. Wow fact पढ़ते हैं. The highest temperature ever recorded in India is 51 degrees Celsius in Falodi, Rajasthan. The lowest temperature ever recorded is 45 degrees Celsius in Siachen glaciers in Jammu and Kashmir. Then we have another one. Here we have directions of winds. The direction of the wind also affect the temperature. The wind that blow from a warm place are also warm, and in which ये wind further increase होती है the temperature of a region. The winds that blow from cold region are called cool and they help bring down the temperature. Delhi जो है, Delhi is hot in summer due to dry and hot winds from Rajasthan, and in winter cold winds from Himalayas cause a cold wave in northern India. Winds coming from sea brings cool and moist weather, and sometimes winds कहलाती हैं cloud along with them, जिसकी वजह से बच्चों बारिश होती है. एग्जाम्पल जो मॉनसून विंड है that come from surrounding water bodies, जिसकी वजह से बारिश होती है. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल बच्चों उमर्स और बरसात के बारे में हम पढ़ेंगे. ह्यूमिडिटी क्या होती है? एक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है जो एयर में रहता है और वो जो अफेक्ट करता है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस को. The air over equator is full of water vapor and the heat of the sun causes rapid evaporation of the ocean water. और इसी के वजह से हैवी रेन होती है सूर्या में, इसीलिए क्लाइमेट नियर द इक्वाटर जो है वो हॉट रहता है और वेट रहता है. रेगिस्तान डेजर्ट आर फॉर्म इन द प्लेस वेयर देयर इज वेरी लिटिल ह्यूमिडिटी एंड सो देयर इज वेरी लिटिल रेन थ्रू आउट द ईयर. Here we have climatic or heat zone of earth. Here you can see कैसा heat zone है हमारी पृथ्वी का. It is mentioned in the picture. Climate or heat zone, climatic heat zone. So rainfall and climate of a place decide the climate of that place. Depending upon amount of heat received from the sun, the earth has been divided into three climatic or heat zone. These are tropical, temperature and polar zone. Then we have wow fact. The earth climate is studied by scientists such as satellites. Data about the climate that is collected includes temperature, precipitation, wind speed and cloud cover and an airy chemistry. Then we have tropical zone. Here you can see we have tropical zone. Now let us read zone. North frigid zone है, Arctic circle है, Tropic of Cancer है, इक्वाटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, एंटार्क्टिक सर्कल है, साउथ फ्रिजिड जोन है एंड साउथ पोल है. हियर इज इट नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, देन वी हैव साउथ टेम्परेट जोन.
ट्रॉपिकल जोन क्या होता है बच्चों? ट्रॉपिकल जोन को टॉरिड जोन भी कहते हैं। ये लाई करता है बोथ साइड ऑफ इक्वेटर के और एक्सटेंड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ. And in this zone, the climate is hot and humid throughout the year because the sun rays fall directly over the area, thus causing high heat. Now let us discuss about the temperate zone. So ये एरिया है बच्चों lying between the torrid zone and frigid zone. ये किस में lie करते हैं? Both lies in hemisphere और इन्हें temperate zone कहते हैं. ये region ना ज्यादा गर्म होते हैं ना ही hot होते हैं. That is why because it is away from the equator. Then we have polar region. Now we have polar region. Polar region is also known as frigid zone and it lies in both hemisphere. In the northern hemisphere, it extends from Arctic Circle to North Pole, and in southern hemisphere, ये extend करता है Antarctic circles to South Pole. So these regions, ये region far away है from the equator, and the sun rays are most slanted here. So the frigid zones are cold almost all throughout the year, और इसीलिए they are the coldest placed on the earth. Sometime हम देख सकते हैं sun को at all during winter months. The polar regions are covered with snow and ice almost throughout the year. Then we have glossary from the chapter moderate, average, neither small nor large, extreme, maximum or highest, rainfall, quantity of rain falling within a given area in a given year. Then we have predict, it is estimate. That's all about this very interesting chapter. Learn all the factual knowledge given in this chapter, highlight all the important points and learn it properly. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली social study class में. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.